All right, I think I'm live now. Yes, I think so. I'm live. Yes, I'm just sending the link to all the students. Please join so that we can begin. I hope you all are able to hear me right now. Yes, please let me know if you are able to hear me. Just let me know, students, if you're able to hear me, and please share the link also with everyone, all the elective students out there. Just a second. Yes. All right. Okay, yes. Hello, everyone. So I think you all had a very hectic day. You might be studying, and tomorrow is your exam, so I won't take much time. We'll just do a revision of the model paper, which is set 3. Okay, so all of you, please download set 3 of your term 1 and term 2. Good evening. Please download set 3 of term 1 and term 2. Today, we'll quickly just go through set 3 of term 1 and term 2. And I won't take much time. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Please share this link also with your friends so that all those students who are not only from the college where I teach, but other colleges as well, they can also benefit from this. Okay. All right. So we'll not waste any further. We'll not waste any time. We'll just begin with our discussion. Please take out download model set paper 3, which is set 3 of term 1 and term 2. I'll just send this in your groups so that you have an idea. Just give me a second. All right, just a second. Yes, I've sent it in your group. The set 3 of both the terms. Please open term 1. Okay, all right. Just open term 1. We'll begin with that first, and then we'll move on to term 2. All right. So I've also marked the answers. So it will be convenient for you all. I've marked the answers. So just let me do one thing. Have you all downloaded it? Because I've marked the answers. You can just answer it quickly here. Have you all downloaded the sets? Just reply on the live chat. Have you all downloaded the sets? Okay. All right. Okay, fine. Okay, so let us begin with our first question. We'll not waste time. Let us begin with our first question. So, as you know, that once tomorrow your exams are, I think the timing is from 2 to 5. Okay, it's from 2 to 5:20. So, 1.5 hours you will be having your term 1, where you will be given OMR sheet. So, you need to mark the answers on that OMR sheet, circle the correct answers. That is very convenient. And just after 5 minutes you will be handed, I think 2 o'clock if your exams begin, then 3:30 के बाद 5-10 मिनट बीच में अगर ब्रेक मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर तुम लोगों को टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा. नाउ 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ये देख रहे हैं कि टर्म 2 में क्वेश्चन पेपर ही दिया जा रहा है आंसर्स लिखने के लिए. ठीक है, आई डोंट थिंक सो 12 में वो वाला सिस्टम होगा या फिर अलग से आंसर शीट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा. कल पहला एग्जाम है, सो वील गेट टू नो आफ्टर योर फर्स्ट एग्जाम इज कंडक्टेड. No matter whatever is the reason, तुमको question में आंसर लिखा हुआ है in how many words you need to answer. So we'll come to term 2. Let us begin with term 1. So as soon as you get your OMR sheet and the question paper, okay, what you have to do is first fill the data. जो भी data है, प्लीज सी टू इट. बहुत स्लोली, बहुत आराम से तुम भरो सारा डेटा, जो भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू बी पैनिकी एंड सेइंग दैट हमसे गलती हो गया, बिकॉज सेंटर अलग है, इट्स नॉट योर होम सेंटर. ओके, सो प्लीज जस्ट कामली फिल ऑल द डिटेल्स. नाम भी लिखोगे तो प्लीज गैप दे देना, कैपिटल लेटर्स में सारा कुछ भरना हो एमआर शीट में, एंड देन come to your question. So first question, if you see the model set paper, it's there. I cannot put that on the screen, so सब कोई मोबाइल पे खोल लो. ठीक है, पहला सेट. Third set 3 of your term 1. General instructions on questions are compulsory. So first term में कोई ऑप्शन नहीं है, term 1 में कोई भी ऑप्शन नहीं, सारा क्वेश्चन आंसर करना है. The total number of questions is 40. Each question carry 1 mark. मतलब 40 मार्क्स का ये पेपर है. 4 ऑप्शंस आर गिवन. यू ऑल नो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. कोई गलत ऑप्शन के लिए मार्क्स नहीं कटेगा.
Okay, now the first passage, जो पहला passage दिया हुआ है, read the questions from 1 to 6 लिखा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करना है, पैसेज को नहीं पढ़ना. ओके, जंप टू द क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चंस देख लो, एंड क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में रीड नहीं करना है, यू जस्ट ग्लांस थ्रू द क्वेश्चंस. ठीक है, तो सेट में हम ऑलरेडी मार्क कर दिए आंसर्स विच आई सेंड टू योर ग्रुप्स राइट नाउ. जस्ट सी one of the greatest advances in modern technology has been. अच्छा, चार ऑप्शन है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली डैश इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ लर्निंग. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस हैज बीन कॉल्ड डैश. ठीक है. द कमिंग ऑफ ऑटोमेशन इज बाउंड टू हैव इंपॉर्टेंट डैश. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डैश. Choose the correct word for correctly which mean the same in the passage. तो correctly word का क्या meaning है? Set 3. Shaheen, set 3. I'm discussing set 3 of term 1. If you're added to the group, I've already sent it. All right, I'll just send it to your college group as well so that you don't have any issue. Just a second. Okay. I've sent it to the college group as well. All right. So questions देख लिए क्या है? For a second तुमको लगेगा टेक्नोलॉजी हैज बीन इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स. तो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट लाइन है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज बीन. तो तुमको याद आएगा, सीधा लिखा हुआ है इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अभी हम यहाँ पर तुम लोग से पूछेंगे नहीं कौन सा ऑप्शन सही है, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम. आई एम जस्ट ट्राइंग टू prepare you so that tomorrow when you enter your examination hall तुमको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न आने वाला है. ओके. नाउ कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली डैश इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ लर्निंग. ओके, देन read the second question, go back to the passage. They are widely used in industry and universities. Okay, now there are hardly any sphere of human life computers have not been. Jump to the second paragraph, glance करते जाओ, देखते जाओ. Computers are capable of doing extremely complicated work in all the branches of learning. So option में क्या है, complicated work is an option. So option number B will be your answer. Okay. Third question, the process by which machines can be used to work for us has been called. जल्दी से आंसर बताओ, what will be the answer? The third question, पैराग्राफ में देखो एंड ग्लांस थ्रू द पैराग्राफ. तुमको अपने को एक वर्ड जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मशीन्स कैन बी यूज्ड, ऑटोमेशन, मेडिसिन, साइंस, स्पीच, कहीं भी तुम्हारे पैराग्राफ में ऑटोमेशन वर्ड मेंशन्ड है तो तुम उसको कनेक्ट करो. Okay, so the answer will be automation. See line number, I think it is the second paragraph and it is the third last line. Third last line, this whole process by which machines can be used to work for us is called automation machine. Now all the students please ये चीज ध्यान रखना that तुम्हारा जो ये objective है, comprehension हुआ, unseen passage, इसमें 6 out of 6 तुम स्कोर कर सकते हो. प्लीज इसमें गलती मत करना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ट्राई टू बी वेरी श्योर ऑफ द आंसर्स एंड देन मार्क इन द OMR शीट. क्वेश्चन में पॉइंट कर लो एंड देन OMR शीट में आंसर करना. The coming of automation is bound to have dash, social obligation, social duty, social consequences या social condition. Last line देखो passage का. The coming of the automation is bound to have important social consequences. चारों ऑप्शन में सोशल वर्ड मेंशन्ड है, लेकिन तुमको एग्जैक्ट कॉपी उठाना है जो तुम्हारे पैसेज में ऑलरेडी मेंशन्ड है. ओके, सो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. कंप्यूटर्स कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड व्हाट? सोशल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स? व्हाट विल बी द आंसर? Computers can solve the most complicated. We all understand personal problem तो computer solve करता नहीं है, social भी नहीं करता है, generally mathematical करता है. लेकिन फिर भी तुम paragraph में जाओ, passage में जाओ कि कहाँ पर ये answer है. I think it is there in line number, second paragraph, second line. They can solve the most complex mathematical. Search for the options in the paragraph. ठीक है, तुम देखो कहीं पर्सनल वर्ड लिखा हुआ है, कहीं सोशल वर्ड लिखा हुआ है, कहीं मैथमेटिकल वर्ड लिखा है. जब तुम ऑप्शंस को सर्च करने लगोगे और क्वेश्चन के साथ, ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर आंसर. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज डन. देन कमिंग टू योर अनसीन द पोएम व्हिच इज देयर.
According to the poet, God has made. Do you want me to go to the poem and also the indirect speech as well? Yes. Please let me know. क्या हम टर्म वन का जो अनसीन पोम है वो भी पढ़ाएं और इनडायरेक्ट स्पीच भी करें, और shall I directly jump to term two? Please directly jump to term two, or shall I continue with this? Because see, I want everyone to be well prepared with both term one and term two. Term one में तुम 40 में 40 ला सकते हो. Okay. So okay, now unseen poem also you need to first go through the poem. I'll not discuss the poem. तुम paragraph passage समझ गए. तो indirect speech में next आते हैं. Okay, Tashu, in a moment we'll begin the question and answers. All right, because a lot of students are having doubts in term one as well. ठीक है, तो हम तुरंत indirect speech कर लेते हैं, and then I'll jump to term two. ठीक है. All right, now coming to indirect speech, as I'll just do one or two examples. बाकी हम group में भेज दिए, वो तुम लोग देख लेना. Choose the correct indirect speech from the given direct speech. Question number 16 to 20 सारा आंसर करना है. David said to Anna, Mona will leave for her native place tomorrow. So बहुत सारा यहाँ ऑप्शन है. David told Anna that Mona would. Now please एक चीज ध्यान रखना, tomorrow जो है वो next day बन जाएगा. Okay. We'll see that the yesterday जो है वो previous day बन जाएगा. तो ये सारा चीज को तुमको ध्यान रखना है. Will जो है वो would बन जाएगा, एंड दैट से शुरू होगा. इन्वर्टेड कॉमर्स जब हटेगा, ये बेसिक चीज है जो तुमको समझ में आना चाहिए. सो द फोर्थ 16th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज डेविड टोल्ड एना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे. ओके, जल्दी से हमको क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दे दो, and then we'll jump to your question and answers literature part. Keshav said Rita is busy right now. Keshav said Rita is busy right now. What will be the correct answer? Keshav said Rita was busy. Keshav said that Rita was busy then. Keshav said that Rita had been busy. Keshav said that Rita is busy. Which will be the correct option? देखो, जो भी प्रेजेंट टेंस होता है, टुमारो नेक्स्ट डे बन जाएगा, yesterday previous day बन जाएगा, right now you're right now busy then बन जाएगा. So ये सारा चीज you need to focus on. Or you can also write Rita is busy. Okay, that is also a correct answer. Okay, now coming to your I think MCQs. Do you want me to discuss MCQs? Please let me know, because I want all the students, the point of view of every student. Do you want me to discuss MCQ? Yes or no? Or do you want me to jump to term two? Please write term one or term two so that I have an idea. Do you want me to discuss term one entirely? Okay. All right. Some are saying term two, some are saying indirect once more. Okay, indirect speech पूछ रहे हैं, तो देखो चारों ऑप्शन जो है I asked है, तो ये चीज कंफर्म है. I asked him why are you working too hard, so हो जाएगा I asked him why was he working so hard, or why he was working so hard. तुम्हारा इन सबसे मेन पॉइंट याद रखना है, व्हेन यू कन्वर्ट योर डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, जितना भी पास्ट टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर लिखा हुआ है शी सेज तो वो शी सेड हो जाएगा. ओके, ऑल द प्रेजेंट टेंस विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट टेंस. प्लीज इसका ध्यान रखना. एंड अगर तुम श्योर नहीं हो, इंग्लिश में बहुत ज्यादा तुमको कॉन्फिडेंट नहीं हो, प्लीज रीड ऑल द 4 ऑप्शन. जो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा, सिंपल टेक्निक है, जो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा, अगर तुम कंफर्म नहीं हो पा रहे हो, प्लीज टिक ऑन दैट. But provided you know how the language sounds properly, so that is an important thing. Okay, let us jump to term 2, 17. Okay, Shagufta is asking 17th ka question answer kya hai. I asked him why he was working too hard. Now see, when you see the answer, why was he working too hard or why he was working, he was इसलिए होगा क्योंकि was ही हम लोग नहीं बोल सकते, अगेन वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा. तो हम यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट जब कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं.
तो हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में आंसर नहीं करेंगे शगुफ्ता. ओके, सो यू विल बी सीइंग दैट who asked this answer, Shagufa. So Shagufa, we will see that the answer will be he said that, sorry, I asked him why he was working too hard. Okay, A will be the correct option. Okay, now let us jump to term 2, because I think that's more important. So, all right, now coming to your term 2, all of you please take out term 2. Okay, now Abhishek Singh, we'll discuss this tomorrow. I think you're of core. We'll discuss this tomorrow, 26. Tomorrow we'll have a live and we'll be discussing English core. So Abhishek Singh, please join tomorrow 9 p.m. I'll let you know those chapters are also included towards the appendix. Okay. All right. So have you all opened term 2, set 3? Please let me know. Okay. Now, how many know what is the difference between essay and composition? Please let me know. If you see, let me discuss how many sections are there. Okay, so it's very important. टर्म 2 में सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और सेक्शन डी है. ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से सुनो. सेक्शन ए जो है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सेक्शन ए जो है उसमें अनसीन पैसेज है. सेक्शन ए इज अनसीन पैसेज. सो यू नीड टू अगेन सिंपल जो हम लोग डिस्कस किए जैसे एमसीक्यूज में किए थे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर आंसर दे देंगे. सेक्शन ए में एक और क्वेश्चन है जिसमें एक अनसीन पोम दिया हुआ है और उसमें तुमको आंसर करना है. ओके, दैट ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड, तुमको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझना है पूरे पोएम का, तुमको जो क्वेश्चंस दिया है उसका आंसर सही सही देना है. सो प्लीज लुक फॉर द आंसर्स इन द पोएम. तुम्हारा जितना भी आंसर्स है वो पोएम में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, वो उसी में लिखा हुआ है. सो पिक अप दोज लाइंस और एक दो एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके अपना आंसर्स लिखना. ओके, तुम्हारा क्योंकि अनसीन पैसेज, तुम्हारा अनसीन पोएम, रिपोर्ट, कॉम्पोजिशन, एसे, ये बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, तो इस पे भी ध्यान देना है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोएम और सॉरी एसे एंड कॉम्पोजिशन? प्लीज टेल मी. एसे एंड कॉम्पोजिशन के बीच क्या डिफरेंस है? When you jump to section B, section A is all about unseen passage, unseen poem, and इसमें दोनों क्वेश्चन आंसर करना है, दोनों ही आंसर करना, उसमें चॉइस दिया हुआ है. सो प्लीज रीड द सब हेडिंग्स प्रॉपर्ली. क्वेश्चन रीड फ्रॉम दिस टू दिस, क्वेश्चन नंबर आंसर फ्रॉम दिस टू दिस. सारा क्वेश्चन आंसर करने का जरूरत नहीं है वरना पेपर 1.5 आवर्स में नहीं कंप्लीट होगा. ओके, ऑलराइट, प्लीज लेट मी नो. किसी को पता है डिफरेंस बिटवीन एसे एंड कॉम्पोजिशन? When you come to section B, there's a question, answer any two of the following in not more than 100 words. Write an essay on importance of internet and write a composition on value of books. Okay, so and third is you have witnessed road accident and as Rahul or Rashmi write a report. Now please students understand, अगर तुम report चुन रहे हो, essay, composition and report, ये तीनों में से कोई दो आंसर करना है. अगर तुम report चुन रहे हो, सी टू इट, अगर वहां पर लिखा है रश्मि या रमेश, तो तुम जब योर्स फेथफुली लिखोगे लास्ट में और योर्स सिंसियरली लिखोगे, तो तुम अगर लड़का हो, यू आर अ मेल, देन राइट रमेश. इफ यू आर अ गर्ल, राइट रश्मि. डोंट राइट योर ओरिजिनल नेम. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्टूडेंट्स लाइक शगुफा, ताशु. तुमको अगर फीमेल हो तुम ताशु नहीं लिखोगी और शगुफा नहीं लिखोगी, यू विल राइट रश्मि as it is mentioned in the question. Similarly goes with the male. If we have Prince or Fazal or whoever the male people, तुम वहां पर रमेश लिखोगे. प्लीज नोट दिस बिकॉज इसमें मार्क्स कटता है. ओके, गेट दिस स्ट्रेट. नाउ ऐसे वो होता है जहां पर तुम अपना पर्सनल ओपिनियन देते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट है, तो तुम उसमें अपना राय डाल सकते हो. इंटरनेट ऐसा है, हम यूज किए हैं, पर्सनल आई करके तुम उसमें बहुत सारा चीज लिख सकते हो. अपने लाइफ का स्टोरी डिपिक्ट कर सकते हो, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ. बट जहाँ कॉम्पोजिशन आता है, तुम वहां पर जरूरी नहीं अपना पर्सनल टच दो. ओके, यू कैन टेक एनी अदर पीपल्स व्यू एंड राइट इट इन अ कॉम्पोजिशन. जैसे ये ऑथर बुक्स के वैल्यू के बारे में ये बोले, फ्रांसिस बेकन ये बोले, शेक्सपियर बुक्स को लेके ये बोले, वर्ड्सवर्थ बुक्स को लेके ये बोले, रुडयार्ड किपलिंग बुक्स को लेके ये बोले. तो कॉम्पोजिशन में योर ओन फीलिंग्स और योर ओन एक्सप्रेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. बट एसे में
तुम्हारा अपना एक्सप्रेशन, अपना थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर तुम कॉम्पोजिशन लिख रहे हो तो वो एक जनरलाइज्ड आइडिया होना चाहिए, और अगर तुम एसे चूज कर रहे हो तो वो तुम्हारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. आई वॉज यूजिंग इंटरनेट, वन डे दिस हैपेंड, आई वॉज स्कैम्ड, आई वॉज दिस, एक एक पर्सनल टच के साथ. सो प्लीज इसको ध्यान में रखना. ऑल राइट, बिकॉज आई डोंट वांट माई स्टूडेंट्स टू make this mistake and lose marks. All right, okay. Now, coming to your section C. So, section A is all about unseen passage, unseen poem. Section B is all about three topics: essay, composition, and report. तीनों में से कोई दो तुमको करना, answer any two. Now, coming to section C. All of you, I had given one, I think, one PDF in your group, okay, which had all the question and answers. Yes or no? Please open that and keep it in front of you. I'll just send it again in the group as well so that you get an idea. All of you, please open that and keep it in front of you. Okay, the PDF which I had sent in the morning, that PDF which has all the question and answers, please open that and keep it in front of you, because in this set 3 model paper, जितना भी answers है वो अभी हम वहां से discuss करने वाले हैं. So please open that. Okay, I've sent it also. Just keep it in front of you so that you have an idea. All right. So coming to your question number 11. अब तुम section C में ध्यान से देखो. There is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 questions है. You have to answer any 5. First, read all the questions. Before you begin answering, read all the questions. उसके बाद टिक कर लो क्वेश्चन पेपर में. अगर तुमको इन्विजिलेटर बोल रहा है कि क्वेश्चन पेपर में कोई भी मार्क नहीं करना है, तो एटलीस्ट एक डॉट दे दो ताकि तुमको पता हो ठीक है ये 5 हम आंसर कर रहे हैं. एंड प्लीज आंसर योर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. ये बहुत बेसिक मिस्टेक है. हम लोग इतना ज्यादा वरीड हो जाते हैं कि हम लोग को तैयारी करना है, आंसर्स लिखना है, कि हम लोग ये स्टूपिड मिस्टेक कर देते हैं और क्वेश्चन नंबरिंग गलत कर देते हैं. एग्जामिनर तुम्हारा नंबर देख के ही आंसर चेक करेगा. नो मैटर तुम ब्रिलियंट आंसर लिखे हो, अगर तुम 17 का आंसर 16 में लिख देते हो, तुम्हारा इंटायर आंसर विल बी मार्क्ड रॉन्ग. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अगर तुम चूज कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 13, शुरू कर रहे हो 13 से, तो तुम सेक्शन सी में आगे पीछे कर सकते हो. अगर तुमको सबसे पहले 17 क्वेश्चन नंबर अच्छे से आ रहा है, गो फॉर 17. सेक्शन को इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक है. एक सेक्शन एट ए टाइम लिखना है. अगर सेक्शन बी में तुम रिपोर्ट लिख रहे हो तो फिर सेक्शन सी नहीं आ सकते हो. सेक्शन बी का दोनों क्वेश्चन आंसर करोगे, फिर तुम सेक्शन सी आओगे. अब सेक्शन सी में मान लो तुमको व्हाट आर सम ऑफ द फ्लॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग अच्छे से आ रहा है, विच इज क्वेश्चन नंबर 15. उसको तुम पहले आंसर कर सकते हो, ठीक है. तो ये प्लीज ध्यान देना. Now, coming to the 11th question, what was the conflict between Tao Ying and her son in the story 1 centimeter? Okay, what was the conflict of Tao Ying and her son in the story 1 centimeter? Please open that PDF which I had sent. Okay, see the question number 13. Question number 13, सबको मिल गया है? Yes or no? Please let me know. Question number 13. Yes, students, question number 13 मिल गया है? Okay. Now 13 में देखो, what was the conflict between Tao Ying and his son in the story 1 centimeter? Xiao Ye thought that Tao Ying only said that he shot so she could get away with not paying for his ticket, when in fact he thought he was tall and didn't trust his mother. This resulted in a conflict between mother and son. So अगर ये क्वेश्चन है Tao Ying और उसके बेटे में क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है 1 सेंटीमीटर में, सिंपल आंसर है. अगर तुम इसको अपने वर्ड्स में लिखना चाहो, ताओ यिंग को, शाओ ये को लगा था, शाओ ये थॉट दैट ताओ यिंग only said that he shot so she could get away with not paying his ticket. Okay, so somebody thought that she's only playing short, or she's behaving, or she's considered short so that she can get away with the ticket. But in reality, what was the fact that he was tall? She thought that he thought that he was tall and didn't trust his mother. So the reason, what was the conflict? Because the child thought that he was tall, but whereas the mother thought that nahi ye chota hai. This was the reason of conflict. Now please see that what is the marks which is allotted to your question paper. The marks is 3 marks. 3 marks में तुमको not more than 50 words है, which means 4 लाइन, 4 से 5 लाइन.
अगर तुम इस पैसेज में इस क्वेश्चन में अगर ये 3-4 लाइन लिख देते हो, 3 में 2.5 यू कैन गेट आसानी से, बिकॉज यू हैव आंसर द क्वेश्चन टू द पॉइंट. ठीक है, तो ये वाला चीज हो जाएगा. All the core students we will discuss tomorrow. Today is only elective. All the core students will meet tomorrow 9 p.m. This is only specially for English elective. Okay. All right. So coming to your question number 12, is the poet's attitude a representation of how the average Indian feels both towards human violence and nature's fury? Give reasons to support your view. Now, when a question like this comes, okay, सबसे, ma'am, if the question is from poetry section, is it compulsory to write the theme? Now see, it depends क्या पूछ रहा है. जनरली एक ऐसा आइडिया पूछता है जहां पर थीम इन्वॉल्व होता है. ओके, सो व्हेन समथिंग लाइक दिस इज आस्क्ड, यू विल पुट द थीम. तुम थीम इंक्लूड करोगे, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से स्मार्टली. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पोएट्स एटीट्यूड, जो है रिप्रेजेंटेशन का कि एवरेज इंडियन कैसा फील करता है टुवर्ड्स ह्यूमन वायलेंस एंड नेचर फ्यूरी. So you'll start writing your answer with this. The poets at an average Indian feels this both towards human violence and nature's fury. Jaise, let me explain. See question number 14. See what is written. Question number 14, see what is written. Yes, the poet is representing the क्वेश्चन क्या पूछा, इज द पोएट रिप्रेजेंटिंग. तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो यस से शुरू होगा. ओके, प्लीज नोट दिस, बिकॉज व्हाट विल हैपन जब एग्जामिनर चेक करेंगे तो वो सबसे पहले यस देखेंगे. जो भी इलेक्टिव स्टूडेंट्स है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज और डोंट गेट पैनिकी. तुम एग्जाम में आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस स्मार्टली आंसर करो. ठीक है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर दो. ठीक है, तुम हाफ अ पेज नहीं लिखोगे, 4 लाइन लिखोगे, बट तुम्हारा मेन आंसर होना चाहिए वहां. सो योर आंसर विल बी yes, the poet is representing the feeling of average Indian towards violence and anger, because nowadays in societies people quarrel on irrelevant matters. Today's society has become a burden on people, and this is due to the other peoples and rules of society which are made according to religion. So question क्या है कि poet का attitude जो है वो एक representation, एक how average Indian feels. तो तुम लिखोगे yes, it is a representation. और क्यों एवरेज इंडियन एंग्री है टुवर्ड्स ह्यूमन वायलेंस एंड ऑल दिस, वो कैसा फील करता है, बिकॉज रिलीजन को लेकर लॉट ऑफ इनजस्टिस, अ लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, अ लॉट ऑफ इल ट्रीटमेंट इज हैपनिंग. यहाँ पर तुम वर्ड्स चेंज कर सकते हो. ओके, बिकॉज मोर और लेस तुम्हारा आइडिया डिपिक्ट होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. कोर स्टूडेंट्स, please, I'll discuss everything tomorrow. This is exclusively for elective. All right? Okay. Okay, now coming to your question number 3, the 13th question. Is it clear, everyone? Elective students, please let me know. Is it clear? Tashu, Shagufa, Fazal, everyone who is present. Ma'am, from which chapter this question is? Okay, just give me a second. I think this is from a just a second. This is from a poem. Just a second. Okay. Tashu, I'll let you know this in a while. Okay, fine. Let us come to question number 15. Question number 15. Sorry, 14. How do the trees, what makes the depiction of crumbling village house so authentic in the poem Blood? So देखो, बहुत सारा, अगर तुम श्योर नहीं हो ताशु, अगर तुमको पता नहीं है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, अगर उसमें चैप्टर का नाम या कोई भी तरीके से हिंट नहीं दिया और तुम श्योर नहीं हो रही हो, 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तुम वो क्वेश्चन छोड़ देना. ठीक है, अगर जरा सा भी डाउट लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन में हमको रिस्क है, हमको पता नहीं किस चैप्टर से है, किस पोम से, यू कैन लीव द चैप्टर. ओके, नाउ कम, अब जैसे 13th क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है ब्लड चैप्टर से ये क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द डिपिक्शन ऑफ क्रम्बलिंग विलेज हाउस सो ऑथेंटिक इन द पोम. So you can see this question in the question number 15 in the PDF which I have sent. Okay, question number 15. The poet Kamla Das has beautifully. Now एक और चीज है, अगर तुम आंसर कर रहे हो इलेक्टिव स्टूडेंट्स और अगर तुम वहां पर देख रहे हो कि लिखा हुआ है व्हाट डज द पोएट फील और व्हाट डज द पोएट शो, अगर तुम पोएट के बारे में श्योर हो कि पोएट का नाम कमला दास है
और अगर तुम लिख देते हो द पोएट कमला दास इज ट्राइंग टू शो दिस, तो तुमको वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है. अगर 3 मार्क्स का है और तुमको 1.5 मिलने वाला है, तो उस कमला दास की वजह से 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है. अगर तुम शो इन द रीडर्स, इतना लिखने का जरूरत नहीं है. अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट टू द पॉइंट तुम आ सकते हो दैट ये डिपिक्शन कैसे है, बिकॉज हियर शी हैज शोन हाउ द फास्ट मूविंग वर्ल्ड मोल्ड्स हर इनटू अ बटरफ्लाई लाइक अ cocoon, and in her writing she had showed the authenticity of the crumbling house, the village house, urbanization and modernization. So see, here what she's trying to say is, okay, so what she's trying to show, the question kya pucha, what makes the depiction of a crumbling village house so authentic in the poem Blood? So here she's trying to show Kamala Das that this entire this village, which is which is right now crumbling because due to urbanization and modernization. जो जितना भी एक विलेज हाउस होता है, that shows the ancient or the sanctity or the tradition which has been following. लेकिन ये urbanization और जो rapid growth हो रहा है, industrialization हो रहा है, इसके वजह से जो how the village house is crumbling down, this has been showed in the poem. So you just have to smartly put your answers in a manner कि वो question को relate करके तुम्हारा answer prove हो जाए. Okay, crumbling, ताशु, crumbling means, for example, you take a biscuit, ठीक है, और उसको तुम पकड़ो and you just press it. What will happen? Entire biscuit will turn into pieces. तो वो जो टूटना होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको crumbling बोलते हैं. Okay, that is crumbling. Understood? Yes, exactly. Sort of crushing, but not entirely. ठीक है, क्रश कर रहे हैं, लेकिन क्रश कैसे होता है, वो प्रॉपर क्रश कर देते हैं. क्रम्बलिंग, क्रम्बल, कुकी क्रम्बल बोलते हैं ना, जो कुकी का क्रम्बल बिट्स एंड पार्ट्स, वो थोड़ा सा बिगर पार्टिकल्स में टूटा हुआ है, दैट इज क्रम्बल. ओके, ऑलराइट. सो ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज इट क्लियर टिल हियर? So when, see, what you have to do, let me just tell you, everyone of elective, जब तुम क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे, जो तुमको पीडीएफ अभी हम जस्ट भेजे हैं, what will happen, read the entire passage answer. It's no need that you have to copy the exact answer. तुम अपने लैंग्वेज में समझ लो कि क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है. दिस इज अ कॉमन फीचर इन मोस्ट विलेज हाउसेज. ओल्ड हाउसेज शो द हेरिटेज एंड रिच कल्चर. तो जरूरी नहीं तुम हेरिटेज एंड रिच कल्चर लिखो, तुम लिखो ट्रेडिशन ऑफ इंडिया. इट शोज अ रिच बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड. द वर्ड्स कैन इंटरचेंज बट आइडिया सेम होना चाहिए. तुम्हारा जो मार्क्स मिलेगा वो आइडिया बेसिस पे मिलेगा. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई नहीं किए हैं, ओके, और कुछ वजह से पढ़ नहीं पाए हैं, एंड अभी वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, बट एग्जाम में 80 ले आते हैं, ये 90 ले आते हैं. हाउ डू दे डू दैट? द रीजन इज दे स्मार्टली आंसर द क्वेश्चंस. ओके, इट्स ऑल अबाउट तुम कितना तैयारी की हो नहीं पता, बट व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू आर हियर गिविंग योर बेस्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट काउंट्स एट दैट मोमेंट. एग्जाम टाइम में तुम क्या लिख के आ रहे हो वो काउंट करता है. सो प्लीज स्टूडेंट, डोंट वरी. ये मत सोचो कि नहीं हम ये चैप्टर नहीं पढ़े और वो चैप्टर नहीं पढ़े. एज मच यू हैव स्टडीड right now, and I've sent the questions which has been prepared by one of my colleague, Mr. Tanmay Singh Solanki, and he has done a wonderful job. He's a Hindi department teacher, but he has prepared the questions of English. So I've sent this in the group as well. उसको एक बार read कर लो. Have the answers in your own words. अपने idea में तुम लिख के आओगे, you will score well. Okay. Now coming to the next question. See the next question. How do the trees in their autumn beauty, dry woodland paths, October twilight, still sky connect to the poet's own life? Okay, so I think just give me a second. Just let me see. I have few questions from students. Till then, do you want me to go line by line to the next passages also? Do you want me to explain Financial Expert and Tiger of Malgudi? Elective students, please let me know. Yes, Thing of Beauty will be explained tomorrow, core students. This is exclusively for elective. Elective students, please let me know. Do you want me to explain in summarized way Financial Expert and that? Okay, just give me a second.
I need to just search something. Okay. So coming back to your yes, just a summary about expertise and Malgudi one. Okay, all right. All right. Okay. So quickly, let's finish this. So, how do the trees in their autumn beauty, dry woodland paths, October twilight, still sky connect to the poet's own life? Now, this is question number 14. जो तुम्हारा जो PDF है उसमें question number 16 is the answer. Can anybody tell me कौन से poem का है ये question? Can anybody tell me from which poem this question is asked? Okay. So, just a general question. I don't want to scare you. कितने लोग को लग रहा है कि कितना परसेंट अभी तक तुम लोग पढ़ाई किए हो? अमंग 100% कितने सारे स्टूडेंट्स ये चीज बोल सकते हैं कि हम 50% मेरा हुआ है, 60 हुआ है, 70 हुआ है, 80 हुआ है? टुमारो इज एग्जाम. ओके. एंड ऑल राइट. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव आर प्रोज ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, पोइट्री अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, या फिर नॉन फिक्शन और ड्रामा? प्रोज, नॉन फिक्शन, पोएट्री और ड्रामा कौन ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हुआ है? नॉन फिक्शन, ड्रामा. ओके. ऑल राइट. व्हाई आई एम आस्किंग दिस, आई लेट यू नो. हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. सी, ऐसा लग रहा है मेरा भी एग्जाम है. बिकॉज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई एम नॉट पैनिकिंग, बट बिकॉज मेरे बच्चों का एग्जाम है कल, तो इट्स जस्ट द सेम फीलिंग दैट आई एम आल्सो हैविंग माय एग्जाम्स एंड आई एम आल्सो गोइंग थ्रू कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. तुम जितना पढ़े हो, give your best in that. Okay. If you start panicking and तुम जितना पढ़े हो या उसको तुम जो थरो कर सकते हो वो भी नहीं करोगे, you will lose your entire marks. So how much you have studied so far, sorry, be confident in that. स्मार्टली आंसर करो एग्जाम में, टू द पॉइंट आंसर करो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो. 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में कोशिश करो 40 आउट ऑफ 40 लाए, या नहीं तो अबव 35. इट्स ऑब्वियस तुम ऑटोमेटिकली अबव 70 स्कोर करोगे, अपार्ट फ्रॉम पोएट्री एवरीथिंग. ओके. ऑल राइट. ठीक है, कोई बात नहीं. हम लोग यहाँ पर आते हैं. This question is from Wild Swans. I think it is from Wild Swans at Cooley by W.B. Yeats. This is the poem, I think. Now, question क्या लिखा हुआ है? Trees in their autumn beauty, dry woodland part, October twilight, still sky connect to. How do these symbols connect to the poet's own life? तो अगर तुमको पोएट का नाम पता है, go for it. पोएट का नाम नहीं पता है, leave it. Just write poet. The trees in autumn beauty, dry woodland. पहले entire one more trick students, जितने भी students यहाँ पर है, जो question लिखा है उसको हूबहू कॉपी कर दो आंसर में, तुमको 1 मार्क ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. अब क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है, आंसर फॉर्म में करना है. कैसे हम बता रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? हाउ डू द ट्रीज this connect to the poet's own life? The trees in their autumn beauty, dry woodland paths, October twilight, still sky, all are connected to the poet's life. एक statement दे दो. Then you start. We see that, and whatever is your answer. Okay. So please see to it. All are represent some sort of sentimentality similar to that of poets. So somewhere we see that the sentiments, the quality is matching. Autumn is the season in which trees prepare to shed their leaves. The woodland remains dry and there is no new evolving life until the rain sets in. Through the twilight. So यहाँ पर तुम चाहो तो एक एक को explain कर सकते हो. 1, 2, 3, 4 4 phrases दिया हुआ है, चारों को तुम explain कर सकते हो. अगर तुम 3 को लेके sure हो तो 3 को ही एक्सप्लेन करो. Tashu, this question is not from trees, I guess. This question is from Wild Swans at Cooley, I guess. I think so. This question is from Wilds, or might be it's from trees. Just let me check once.
Yes, I think it is from trees, right? Just a second. Now, I haven't done the poetry part, but just give me a second. Is Wild Swans at Kuli coming in your first term or second term? Just give me a thumbs up on that. Wild Swans, non-fiction. Yes, Shagufa. What is it? Trees is coming in your term one, or which one? Which chapter is coming in your term one? Okay, both are there in term two. Trees as well as Wild Swans at Kuli. Okay, just a second. I think it is from Wild Swans at Kuli. Just give. Let me check once again. Yes, it's some trees. Okay, just give me a second. I'll just check it right now and let you know. Now this is from Wild Swans at Kuli because the question here. Please open the Shagufa and Tashu, stop fighting here. Okay. See, whenever you have a doubt, open the chapter. Open the poem. When you read the Wild Swans at Kuli by W. B. Yeats, the first line: the trees are in their autumn beauty, the woodland paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. Upon the brimming water among the stones are 950 swans. Okay, so this is from the poem The Wild Swans of Kuli. At Kuli, sorry, The Wild Swans at Kuli. Tashu, is it clear right now? It's all right. You might have confusion. Okay, all right. So it's okay. You might have confusion. It's okay. All right, so now here you see how this is explained. Now please pay attention. Okay, now see how it is explained. Autumn is the season. So यहाँ पर लिखा हुआ है trees in their autumn beauty, dry woodland paths, October twilight. So trees in their autumn beauty. Autumn is a season where trees prepare to shed their leaves. Woodland remains dry, and there's no new life which is evolving from there. Twilight is the most beautiful part of the day, which leads from darkness to light. The stillness of the sky is too counted similar to coldness. So everything associated. Now when you look at, अगर तुम ये सारा फ्रेजेस को इंडिविजुअली देखोगे, भले ड्राई पाथ को देखोगे या ट्वाइलाइट को देखोगे या फिर ऑटम ब्यूटी को देखोगे, तो कहीं ना स्टिल स्काई को देखोगे. ओके, when it is cloudy and when it is filled with rain, the clouds are filled with rain, or when it is a beautiful breezy atmosphere, we try to connect it with a happy mood. पर अगर स्टिल स्काई है, कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है, इट्स अ ब्लैंक कैनवस, लाइक अ ब्लैंक कैनवस, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज कनेक्ट करते हैं. इट्स कनेक्टेड टू लोनलीनेस और स्टिलनेस और ड्राई लाइफ. तो वही चीज लिखा हुआ है, एवरीथिंग एसोसिएट्स टू द पोएट्स ओल्ड एज एंड सेटिंग ऑफ द सैडनेस एंड लोनली एटमॉस्फेयर. सो डब्ल्यू बी ईट्स का जो ये पोएट का जो लाइफ है, द सेटिंग इन ऑफ ओल्ड एज, बिकॉज द ऑटम सिंबलाइजेस हाउ द लीव्स शेड during that season. So you connect it with that. All right. Okay. Is it clear? Let me proceed to the next question. What are some of the flaws of the world of filmmaking? So, how many are finding filmmaking very difficult? How many are finding filmmaking difficult? Yes. Okay. All right. Just give me a second. Yes. All right, neutral. Okay, so let us come to the answer without wasting any time. The world of filmmaking. See the question number 17 in the PDF. The world of filmmaking is dependent on learning on each other's work and collaborating together. So देखो, filmmaking क्या होता है? There are a lot of teams involved. ठीक है?
whether it is the creative team, or whether it is the makeup team, or whether it is the director who is shooting, the light person who is handling the light, the one who is going with the camera, the one who is providing you the required accessories. So different cheese hota hai. The filmmaking involves an entire team. So when the people the question is, what are the flaws of the world of filmmaking? But today people have become so self-conscious that they do not share their ideas and concept, and that can prove useful. People are no longer polite and gentle. Expression has become very brutal. What was as easy as to play the author once has now become struggle. Failure, criticism is becoming more and more evident in today's time. So in simple sense you can say flaws क्या हो चुका है. पहले क्या होता था, people used to come together and work in collaboration, but right now what is happening, people are trying to reserve themselves with their own ideas. They are not sharing it, they are not expanding their network, they are not building communities of filmmaking. And because of that, what is happening, and also if they are doing that, a lot of harsh criticism, failures are coming in their way. People are having strong opinions, brutally they are addressing. So ये सारा कुछ flaws of filmmaking में है, इसलिए people are finding it very difficult nowadays. Okay, now coming to the next question, give instance from the poem Trees. So Tashu, ट्रीज पोएम आ गया है, अब ये तुम्हारा पोएम है. ओके, सो ताशु के पोएम के नाम से अब जाना जाएगा ट्रीज. शी वाज सो मच इंटरेस्टेड इन इट. ओके, गिव इंस्टेंस फ्रॉम द पोएम ट्रीज दैट शोज दैट ग्रेट पोएट्री इज रिजल्ट ऑफ क्लोज observation of natural phenomena. Okay, now if you know the poet's name, you say Emily Dickinson made a keen observation of natural phenomena and all those things. Now if you haven't done this poem trees अगर नहीं किए हो, तो उस 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऑप्शन है तुमको छोड़ने का. You can do that. Okay, so give an instance from the poem trees. Can do, and does anybody want to answer this? नाउ सी, अगर तुम अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे तो तुम ये लिख सकते हो कि ग्रेट पोएट्री ट्रीज से कैसे हम लोग ले सकते हैं, या फिर नेचर से कैसे ले सकते हैं. जस्ट लेट मी गो थ्रू दिस, रीड दिस सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. In the poem Trees, she describes how the branches and leaves, तुम कैसे आंसर लिखोगे अभी हम बता रहे हैं. Leaves wave in the morning breeze during summer. Miniature creatures start humming tunes. Sun rises, disappears in thick clouds. Birds sit. Snake go here and there. You see the flowers are blossoming. Okay, so question क्या है? Give instances from the poem Trees that shows great poetry is a result of close observation of natural phenomena. Entire चीज को आंसर फॉर्म में कॉपी कर दो. There are many instances from the poem Trees that shows great poetry is a result of close observation of natural phenomena. Full stop. पहला स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज तुम क्वेश्चंस कॉपी नहीं कर रहे हो. when you're not copying the question, which means examiner जो है वो क्वेश्चन नंबर देखेगा और चेक करेगा. अगर तुम पहले ही लाइन में उस एग्जामिनर को कंफर्ट फील करा देते हो कि उसको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है कौन सा आंसर वो चेक कर रहा है, पहला लाइन से ही क्वेश्चन मिल गया है उसको इन एन आंसर फॉर्म, ठीक है, एंड देन यू गिव योर आंसर, दे विल टेंड टू गिव यू मोर मार्क्स. ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है, प्लीज इसको याद कर लेना. ऑलराइट, okay, now coming back to the thing, is it clear? Is elective students, are you all understanding? So when you want to give instances, क्या instances हो सकता है from the poem, that there's the natural phenomenon क्या होता है, the sun rises, okay, and because great poetry कैसे आता है, when you see natural things you can rhyme those things, you can put it in a very fluid manner. So the sun rises, there's a morning breezes during summer, the sun rises and hides itself in thick clouds. ये सब याद कर लो, points याद कर लो कि क्या क्या instances है from the poem Trees. कैसे branches wave करता है, branches and the leaves wave during the breeze in summer. Second point है कैसे जो miniature है, जो small animals है, they start the small birds start humming tunes. Okay, then you see the sun rises and hides itself in the thick cloud. Third, how the birds are sitting in casual manner and they are chirping endlessly. Fifth,
sorry, yes, fifth snake, it is going round and round on in the grass or in the ground. Petals of the buds are there and it is blossoming into flowers. The buds are blossoming into flowers. So ये सब instances है जो तुम्हारा trees poem से ये पता चलता है how it can become a great poetry, whether it is the leaves and branches swaying in the wind in the summer breeze, whether it is the snake which is making rounds in the ground, whether it is birds chirping endlessly, whether it is your sun which is rising and then hiding in thick clouds, or whether it is miniature who are humming tunes. Okay, so these all you are, I know it's very confusing, Tashu, but it's okay. तुम सिर्फ इसका क्वेश्चंस पैटर्न में पढ़ लो. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ये इस पे क्वेश्चंस किस किस तरह का आया है. ओके, उसी मैनर में अपना जो प्रेपरेशन है कर लो. इट विल बी कन्वीनियंट. अभी एग्जाम के एक दिन पहले अगर तुम पूरा पोम समझने जाओगे तो यू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. तो एग्जाम पॉइंट व्यू से अगर पढ़ाई करना है तो तुम क्वेश्चंस देख लो किस किस तरह का आ रहा है पांचों सेट में. उस अकॉर्डिंग तुम अपने आप को प्रिपेयर करो. ओके ताशु, everything is mixing. Okay, see, I understand. Everything is mixing. It's confusing. नहीं समझ में आ रहा है. That's why I'm saying relax yourself. जितना पढ़ी हो, जितना confident हो, go with that. Okay, just tomorrow because it's beginning, your exams are beginning. 1 बजे exam hall में चले जाना होगा, center में चले जाना होगा. Do one thing. Whatever you're confident, तुम बहुत अच्छे से पढ़ी हो. Get up in the morning. Everyone, I'm talking to everyone, not only Tashu. Just start revising it. Okay, and जो तुम secondary level पे रखे हो उसको एक glance दे दो. अच्छा ठीक है, ये chapter है. All right. Okay. Vikram, I will go when the entire portion is completed. You are free to leave if you wish to. But right now I think I need to complete few things, so I will be here. All right. So then the next. So is everyone following elective students? Am I making sense? Elective students, is everyone following? What childhood? Please let me know so that it also give me the encouragement to go further. Okay, coming to the 17th question. What childhood memories does the author recollect in filmmaking and had a bearing on his later involvement with filmmaking? So filmmaking से 2 questions आया है. Okay, I don't know freedom से क्यों नहीं पूछे हैं ये लोग, और but that doesn't mean freedom से questions नहीं आएगा. Freedom से भी question आ सकता है, why the novel matters से भी question आ सकता है. Okay, it's not only filmmaking से आएगा. Okay, coming back to your PDF, see the question number. I think it is 19. What childhood memories are involved? So author had a childhood which made him aware of 2 main types of characters in his life. So again you'll state the question. इस आंसर में वैसा question को नहीं state किया गया है. Say that the childhood memories, or you can write author had a bearing. Author had few childhood memories which had a bearing on later involvement with filmmaking, or the author's childhood memories had a later involvement with filmmaking. Okay, and then you begin your answer. The good and the villainous. So in this answer we understand that author का जो childhood memories है फिल्म मेकिंग से 2 तरह का कैरेक्टरिस्टिक में बटा हुआ था. एक अच्छा था और एक विलेन का रोल था. एक हीरो का रोल प्ले किया, एक विलेन का रोल प्ले किया. He came to know about these things. His father, who prepared sermons, from his knowledge, he easily connected to the stories. Red Riding Hood, the wolf, others. The wolf was the devil without horns, obviously. From imagining these bits of from church bells and hearing a piano. Okay, so you have to give the instances which happened with him. उसके पापा sermons prepare करते थे और वो रेड राइडिंग हुड का स्टोरी सुनता था. वो जो वहाँ वुल्फ था वो एक विलन की तरह एक्ट किया. And somewhere these stories had an impact on the filmmaking which he did later on in his life. Okay, all right, till here everyone is clear. Shall we proceed to the next section? Section D. Section D. Have you all opened set 3? Have you all opened set 3 in front of you? Section 3, section D. We'll switch to section D.
Yes, elective students, section D. Okay. Now please see to it that सेक्शन डी में तुमको दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप आंसर करना है, या नहीं तो ग्रुप ए आंसर करना है, या नहीं तो ग्रुप बी आंसर करना है. ओके. नाउ ग्रुप ए इज ऑल अबाउट योर, आई थिंक इट इज फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्सपर्ट. It's about Margaya, it's about Balu, it's about I think the lady who is there, Minakshi. Okay. This is all about group A financial expert. Group B आ जाता है टाइगर एट मालगुडी. ओके. ग्रुप बी इज ऑल अबाउट टाइगर एट मालगुडी, जिसमें आर के नारायण टाइगर फॉर मालगुडी. यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ दोनों में से कोई एक करना है, विच मीन्स ईदर यू स्टडी टाइगर फॉर मालगुडी और यू स्टडी फाइनेंशियल एक्सपर्ट. चॉइस इज योर्स. अगर अभी तुमको जो इजी लग रहा है वो पढ़ो. आई वुड सजेस्ट टाइगर फॉर मालगुडी इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज दैट इज एन easier way to answer your questions. Yes, yes, Shagufa, I answered before you asked the question. Okay, good. I think Tiger for Malgudi is easier. Why I'm telling you? क्योंकि अगर तुम question देखोगे, describe Tiger's life at Mempi Hills. तो अगर तुम PDF turn करते हो, see the PDF towards the end. Sir has already prepared an entire summary for Tiger for Malgudi. Did you get that? Yes, yes, Tashu. Malgudi is easier. Yeah, yeah. Because R.K. Narayan writes in a very simple way. अभी possible नहीं है कि तुम जाके पूरा novel पढ़ोगे और पूरा story पढ़ोगे. So do one thing, read the summary. It's there in the PDF. All right. In the story, it's all about a tiger, okay, whose name is Raja. A tiger whose name is Raja, and he is he's he tries to tell a lot of things. This chapter is written from the perspective of a tiger, Raja. All right, group A or group B से एक करना है. Exactly. See, now let me okay, first let me summarize what the questions are asked. So if you jump to your Meenakshi, the typical Indian housewife, submissive, practical, discuss. Meenakshi is the mother of Balu, and here we need, if you have not read the chapter, you'll not be able to understand. Okay, it's there in the PDF. You can go and look at that. How she has adapted herself as a domestic woman, how she has been living her life despite her husband who is a financial expert. So Margaya is a financial expert. बालू उनका बेटा होता है जो बहुत बदमाश होता है, वो कभी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो पास नहीं हो पा रहा है, और ही इज अ वेरी मिस्चीवियस चाइल्ड. ऑलराइट. Second question, attempt a character sketch of Margaya. So Margaya here is the financial expert. If you turn to the PDF, you'll get the answer of you have a character sketch of Balu, you have a character sketch of Margaya. But that doesn't mean exact यही question तुम्हारे कल boards में आएगा. It can be the same question, it can be a different question. So it's better you read the summary of the entire novel. जो भी तुमको easy लग रहा है, go with that. All right. Okay. Now Clutch Whitey, you can get my book at a variety store, which is New Variety Store Sakchi. It's available there, and we'll discuss this later tomorrow in the live. Now Tiger for Malgudi, it all comes down to this is a story of a tiger, ठीक है, जिसका नाम राजा रहता है, and he is there. He starts describing, nostalgic होता है और अपने life के बारे में बताने लगता है, that how he has been uh, he starts discussing about his memories and of the wild before he was captured by humans. Okay, so how you used to live like a proper shahenshah, like a proper king, because obviously he was a tiger, and जितने भी बाकी लोग थे वो उनको बहुत ज़्यादा, जितने भी animals थे, they used to respect him. Now, the novel begins as Raja remembers his early life. He was born in an Indian jungle. We all think that जितने भी बाकी जानवर थे, जितने भी animals थे, they used to fear him a lot. Okay, they used to be afraid. But Raja कौन है? He's the tiger. He was living his life at in this रेंज कॉल्ड मेम्पी रेंज. ठीक है, एक माउंटेन एरिया था, मेम्पी, MEMPI. वो वहां ये लाइफ अपना रहता था. ही वॉज लिविंग देयर, एंड ही वॉज नॉट एन इनडिस्क्रिमिनेट किलर, डिस्पोटिक रूलर, बट एन dominant and occasionally ruthless one.
ओके, सो ये जनरली राजा जो टाइगर था वो क्या करता था, वो एनिमल्स को पनिश करता था जो उसका उसका डिसरिस्पेक्ट करते थे। बाकी जो उसका रिस्पेक्ट कर रहे उसके साथ हार्मनी में रहता था, बट दोज हु यूज्ड टू डिसरिस्पेक्ट हिम और नॉट लाइक हिम, ही यूज्ड टू पनिश देम, ईदर उनको खा जाता था और यूज्ड टू डू समथिंग। All right. So at the same time, वो बाकी creatures के लिए also he had this compassion. Now one day Raja's sense of supremacy undermined. Okay, so now Raja, this tiger, he was a male tiger, and one day he had an ego clash because एक female tiger आती है and उसको समझ में आ जाता है that ये female tiger जो है मेरे टक्कर की है. She is exactly we have this same mentality, we have this same mindset. Okay, so they fight and are an equal match, nearly killing each other. So when they fight, they understand that दोनों में equal power है, equal ताकत है, and they are an equal match. So a wise jackal inspires them to speak to each other rather than fight. Obeying his word is surprising. Become friends. They become mates and bachelors. So they become husband and wife. Okay, we cannot say that in animals. And they became friends because a jackal told them that इससे अच्छा तुम लोग लड़ रहे हो, enemy बन रहे हो, better है friends बन जाओ. Okay, so this is how the story is going on. So when the question comes, which is question number 21, discuss R.K. Narayan's teasing wit and insight into human nature in A Tiger of Malgudi. तो इसमें तुमको जो ऑथर है आर के नारायण, ये किस तरह से ह्यूमन इंसाइट और विट को लाए हैं, तुमको समरी लिखना है टाइगर फॉर मालगुडी का, लेकिन एक बहुत स्मार्ट वे में. तो अगर तुमको स्टोरी पता होगा तुम बहुत इजीली ये लिख सकते हो. इनफैक्ट दिस क्वेश्चन डिस्क्राइब टाइगर्स लाइफ एट मेम्पी हिल्स. तुम स्टार्ट करोगे, टाइगर का नाम राजा था, ही वॉज लिविंग देयर एट मेम्पी हिल्स, he used to dominate, he was not a very friendly ruler, he was a very ruthless one occasionally and a very dominant one. जो उनको पसंद करता था, he used to be in harmony with the other creatures, but जो नहीं पसंद करता था और disrespect करता था उनको वो punish करते थे. One day he had a fight, had an ego clash with this female tiger and almost they killed each other, but then एक jackal है वो उन लोग को advise किया to become friends. They become friends, they mate and they had children. So this is how you will be talking about his life at Mempi Hills, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा. ओके, एंड ये दोनों में से कोई एक करना है. सो अगर तुम ग्रुप सेक्शन डी में आते हो, ग्रुप ए या ग्रुप बी है, उन दोनों में से पहले कोई एक चुन लो और फिर उसमें जो 2 क्वेश्चन है उसमें से भी कोई एक करना है. सो इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है. ऑल राइट, इलेक्टिव स्टूडेंट्स, आई आर फॉलोइंग? इज इट क्लियर? आई आर अंडरस्टैंडिंग टाइगर फॉर मालगुडी? So one day what happens, Raja's 3 cubs were tragically killed by human. The poachers जो आते हैं, पोच करने आते हैं, जो किल करने आते हैं, जो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने आते हैं by killing animals, वो राजा जो टाइगर था उसके 3 बच्चे को they kill, they finish it. Now obviously this Raja starts seeking revenge and he says that he will go and he will finish everyone. So he starts by stalking human villages and वो openly घूमने लगता है हर जगह. And one day is captured by captain who runs a circus. Now captain and his wife Rita trained Raja to perform stunts. So now he is stalking the villagers and one day एक captain रहते हैं जो राजा को पकड़ लेते हैं, टाइगर को पकड़ लेते हैं, and राजा and his wife Rita they conduct a circus and राजा को train किया जाता है to perform. Now राजा performs stunts and वो एक goat के साथ stunt perform करता है, दोनों एक साथ equally milk पी रहे हैं. This is how the audience are enjoying and everything. One day, but this Raja was tempted and he couldn't overcome his natural instinct and he ate that goat. Now obviously when he ate that goat, Raja को captain निकाल देते हैं. All right, he is thrown away, he is put out from the circus by the captain. Now Madan, a film director, comes to the captain. Now Madan एक अलग character, तो अभी तक हम लोग कितने character से मिले? राजा है, then captain है, उनकी wife Rita है, then another film director comes in, Madan, जो बोलते हैं that I want Raja to be casted in a film and I want Raja to play a role. So
the captain again, they make a deal obviously because captain के ownership में राजा था, तो जितना ही पैसा वो किसको मिलेगा, टाइगर तो पैसा कुछ करेगा नहीं, so the owner will get the money. Exactly. So here this thing is made. Raja is at the is to the stage for a fake fight with a strong man Jaggu afraid of Raja, he's unable to fight. So एक अलग कैरेक्टर आता है जो वहां पर हीरो है उस मूवी में, एक साइड कैरेक्टर है जग्गू, जो एक फाइटर काइंड ऑफ दिख रहा है वहां पर, एक स्ट्रॉन्ग मैन है. एंड इन वन अटेम्प्ट टू द फिल्म राजा अपसेट्स कैप्टन बिकॉज he electrocutes him with a cattle prod. The rod does not subdue Raja's intent. Tiger retaliates by killing captain. Okay. Now one day what happens, this Jaggu who is the strong man जो राजा के साथ शूट कर रहा है, okay, there's a fight scene and वो टाइगर के साथ शूट कर रहा है. One day what happens, वो इतना intimidate हो जाता है, इतना afraid हो जाता है that he leaves the he is out of the show. उसको नहीं समझ में आ रहा how to act with the tiger. And by mistake or one day what happened, he electrocutes him. Electrocute मतलब क्या होता है, for example current लगा देना, ठीक है. This happens with the cattle prod. So see, in one attempt to the film Raja upsets captain who electrocutes him. So now राजा इज नॉट ओबेइंग. राजा को देख के वो जग्गू डर जा रहा है, तो कैप्टन क्या करता है, एक दिन राजा को इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है, करंट लगा देता है. इन दिस रिटेलिएशन मतलब जो आउटकम होता है, राजा एंड्स अप किलिंग द कैप्टन जो उसको कैप्चर करके सर्कस में लाए थे. ओके. Now the film set erupts into chaos. राजा भाग जाता है, राजा ऐसे ही रोम करने लगता है विलेज में here and there, and he enters the city of Malgudi. Okay, he enters there, he's running here and there throughout the city. The entire city is in panic. It's the everybody is now getting panicky, and they don't know what to do. But Raja on the other hand is very curious about humans. Okay, he visits many cafes and businesses. He even visits school. All right, and he falls asleep in the headmaster's office. When he wakes, the principal and other staffs are cowering and calling for help. So we see that Raja, अगर ये क्वेश्चन आता है राजा मेम्पी हिल्स में का लाइफ डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब टाइगर्स लाइफ आएगा, राजाज लाइफ अगर आएगा तो प्लीज ध्यान रखना टाइगर का नाम राजा है. तो अगर ये आता है कि डिस्क्राइब टाइगर्स लाइफ एट मेम्पी हिल्स, तो तुमको ये सारा पॉइंट नहीं लिखना है कि राजा भाग जाता है वहां से और वो निकल जाता है और कैप्टन उसको कैप्चर कर लेता है, ये सब नहीं लिखना है. सिर्फ वहां तक लिखना है जहां वो फीमेल टाइगर के साथ मिलता है एंड दे बिकम फ्रेंड, यहाँ तक लिखना है. अगर ये क्वेश्चन आता है कि मालगुडी में उसका क्या लाइफ रहा है, देन यू हैव टू बिगिन विद एक शॉर्ट आइडिया दे देना कि राजा जो है वो कैप्टन के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ही किल्स द कैप्टन एंड दैट्स व्हाई ही रैन एंड ही एंटर्ड द सिटी ऑफ मालगुडी. जब मालगुडी एंटर करता है तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी होता है टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस, बिकॉज सी वो डोमिनेंट रूलर तो है लेकिन वो बहुत अदर क्रीचर्स के साथ हार्मनी में भी रहना चाहता है. एक डुअल पर्सनालिटी है उस टाइगर के अंदर, एक तरफ वो गुस्सा भी आता है उसको, एक तरफ उसको हार्मनी में भी रहना है लोग के साथ, पीस में. सो ही विजिट्स स्कूल्स, ही विजिट्स कैफेज, बिजनेसेस, और एक दिन तो हेडमास्टर के ऑफिस में जाके सो जाता है. जब उठता है तो देखता है कि जितने भी लोग हैं वहां पर दे आर जस्ट कॉलिंग, दे आर शाउटिंग फॉर हेल्प. ओके. Alphonse appears with a gun but doesn't dare to enter the office. So Alphonse, another character, he appears with a gun. A spiritual leader known as the Master also appears. Alphonse drinks too much rum before attempting to the rescue mission. He passes out. Master enters the office. Raja is surprised that he's able to understand the Master's speech, unlike other humans. The Master orders Raja to leave calmly, and he obviously listens to him. Now, what happened? जब ऑफिस में है एक अल्फोंसो नाम का आदमी आता है एंड ही हैज हैड टू मच रम. ओके, अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है, सोचता है हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के टाइगर को शूट कर देंगे, बट बिफोर ही कैन डू दैट ही पासेस आउट. ओके, ही फेंट्स. अनदर कैरेक्टर स्टेप्स इन, मास्टर, जो एक स्पिरिचुअल लीडर रहते हैं. एंड राजा को ये बहुत एस्टोनिशिंग लगता है दैट वो बाकी लोग उनका फॉर एग्जाम्पल कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसा लैंग्वेज बोल रहे हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं समझ सकता है. ओके, इट्स स्पिरिचुअल, इट्स बियॉन्ड दैट. वो राजा समझ पा रहा है एंड ही इज वेरी सरप्राइज. सो ही आस्क्स हिम टू लीव, आस्क द टाइगर टू लीव. मास्टर आस्क द टाइगर टू लीव एंड राजा बहुत पीसफुली टाइगर का बात मानता है एंड ही गोज अवे. ऑलराइट. नाउ
Raja and Master travel throughout the India. So now this Raja and travel. All of you have seen Life of Pi. कितने लोग Life of Pi देखे हैं? Okay, it's 11. I think it's too much. It's a lot of time. I'll just finish the thing and I'll go because I know students तुम लोगों को सोना भी है. I'm so sorry. Okay, so Raja and this, they travel this entire, they go here and there, mountains जाते हैं, इधर उधर जाते हैं. One day a woman appears and demands Master to return to her and their children whom he abandoned. Master replies, he is now a different person, just as Raja is no longer a violent disheartened. Okay, सो राजा मास्टर की वाइफ आती है एक दिन एंड वो बोलती है कि आप चलिए वापस चलिए अपने बच्चों के पास. एंड मास्टर सेज नहीं, हम बदल चुके हैं, वैसे ही जैसे राजा बदल चुका है, अब वो वायलेंट बीस्ट नहीं रहा. एंड द वुमन रिटर्न्स. नाउ राजा बिकम्स एन ओल्ड टाइगर and he's kept in this master invites a zookeeper from Malgudi to keep it in the cave. And now this Raja, the two of the friends, they part ways, and Raja here understands and shows this message and gives this message. How is it possible? It is possible for a human and an animal to coexist together in harmony. Just as in Life of Pi, you have seen how all creatures should live together in peace and create this world of togetherness. ठीक है, यही है टाइगर फॉर मालगुडी. Everybody understood? Till now, I'll end the live by wishing everyone best of luck because it's 11 p.m. and I think everybody needs to study. So is it all right? सबको समझ में आ गया? Yes, shall I end the live? Yes. Yes, okay. So अब तुम देख लो फाइनेंशियल एक्सपर्ट करना है या टाइगर फॉर मालगुडी. आई वुड सजेस्ट टाइगर फॉर मालगुडी करोगे तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा बिकॉज तुम बाकी सेट्स को एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सी ऑल द सेट्स ऑल्सो, क्योंकि बाकी जितना भी सेट देखोगे उसमें सेम तुमको ये चीज मिल जाएगा दैट इधर एक क्वेश्चन पूछा गया है फाइनेंशियल एक्सपर्ट से और एक क्वेश्चन पूछा गया है टाइगर फॉर मालगुडी से. तो अगर टाइगर फॉर मालगुडी पढ़ के जाओगे तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट आंसर करने का झंझट नहीं रहेगा. ओके, सो अभी स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है, डोंट स्ट्रेस. ऑल ऑफ यू विल डू वेल, एक्सट्रीमली वेल इन योर एग्जाम्स. And I am not lying. It's like I'm feeling I'm also having my exams tomorrow. So as soon as I get the question paper in the invigilation duty, I will automatically think that how much what you all are writing there in that exam hall. So thank you so much. All the best. Please do well. And we'll discuss then later on how the paper went and everything. Please keep in mind that हर section को individually करना है. Section के अंदर जो question पहले आता है तुम कर सकते हो. Question your number correctly, answer your number correctly, and please don't miss on objective questions. 40 में 40 ला सकते हो, and keep your paper neat and clean. बहुत ज़्यादा score कर सकते हो उसके वजह से. And all the best. Okay, so thank you so much. Thank you so much. All the best. Do well, and you'll all be in my prayers. So सबका result अच्छा होगा. Okay, so thank you so much. Bye. Take care. And good night everyone. अभी ज़्यादा stress नहीं लेना. Relax and sleep. Okay, all right. Okay, bye. Thank you. Bye bye. Thank you. And yes, before I end, all the core students, if you're here tomorrow 9 p.m, we will be having live tomorrow, day after, and after that also. Okay, all right. Thank you.